सो क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है ना. सो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार पढ़ना. x plus y is equal to 16 and x cube plus y cube to this function. We have to minimize this function. So let us consider this as s. So s is equal to x cube plus y की वैल्यू यहां पर से क्या आ जाएगी 16 minus x whole cube. Okay, now differentiate s with respect to x. So ds upon dx is equal to 3x square plus 3 times of 16 minus x whole square. Okay, now we will make this derivative equal to 0. So ds by dx is equal to 0. So 3 times of x square plus 3 times of 16 minus x whole square is equal to 0. Take 3 common. So it will be x square plus 16. Yes, sorry, correction. Into minus 1 भी हो गया यहाँ पर. Yes. So यहाँ पर ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा. ओके, सो ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा. ओके, फर्दर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में जाके 0 हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो माइनस 32x ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 0. फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज 256. So it will be minus x square minus minus plus 32x, that is equal to 0. Okay, x square ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी. ये वाली टर्म इधर शिफ्ट होगी. सो 32x is equal to 256. Okay, so x is equal to 256 divided by 32. Okay, 16 2s are 16, 16s are 2 1s are 2 8s are. So you'll get x is equal to 8. यहाँ तक क्लियर. फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव कहां पर आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला एक्सप्रेशन, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. सो डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x माइनस 3 ऑलरेडी था, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, दैट इज 6x माइनस माइनस प्लस 6 टाइम्स ऑफ 16 minus x. Further, when you open the bracket, you will get 16 into 6 only, because ये 6x और minus 6x cancel out हो जाएगा. Clear? So it is greater than 0. Greater than 0 means this value will give you minima. So minimum when x is equal to 8. Okay. Shavi, have you solved this question? Yes, sir, I got the answer. Okay. कृष्णा, ये किया था लास्ट क्लास जो मिस हुआ उसका. सॉरी. ओह सॉरी, अमन, मैंने रॉन्ग ग्रुप में डाल दिया था मैसेज. ठीक है, एक्चुअली मैं लिंक गलत ग्रुप में डाल दिया. Okay, so let's start with next question. Question number, till question number 4 we are done. Next, question number 5. Question number 5. Start with question number 5. So question number 5 क्या नैना, एक बार क्वेश्चन पढ़ना. Prove that of all rectangles with given area, square has least perimeter or smallest perimeter. Okay, so we will consider a rectangle. Let us consider this is a rectangle. Okay, और इसके जो डायमेंशंस है उसको हम x और y कंसीडर करते हैं. ओके, ऑल रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया. सो यहां पर गिवन वर्ड जब भी आएगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. गिवन है, इट मींस दैट इज कांस्टेंट. सो क्या कांस्टेंट है यहां पर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कांस्टेंट. ओके, सो वी विल कंसीडर a, दैट इज एरिया, इज इक्वल टू x इनटू y. यहां पर x और y वेरिएबल्स है, दे आर नॉट कांस्टेंट, बट a इज कांस्टेंट. ओके, नेक्स्ट, what we have to minimize, perimeter of this rectangle. We have to minimize the perimeter of this rectangle. Okay, so perimeter of rectangle, let us consider that this as p.
सो फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, It एक, is saying square in the question. यस, The square has the smallest perimeter. जस्ट वेट अंडरस्टैंड दिस, इसको समझो पहले, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्क्वायर हैज मिनिमम स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, ये आपको प्रूफ करना है। यू हैव टू प्रूव दैट अमंग ऑल द रेक्टेंगल्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम। ओके, सो you have to prove that x is equal to y, you have to prove that it is a square। क्लियर हुआ ये चीज, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है, और पेरीमीटर जो है इस रेक्टेंगल का वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। क्लियर हुआ ये चीज। तो इसमें ना तीन चीजें, तीन पॉइंट्स आप अच्छे से समझो। पहला कि क्या कांस्टेंट गिवन है, जो गिवन है दैट इज a। सेकेंड, जिस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो पेरीमीटर वो फंक्शन है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज यू हैव टू मिनिमाइज द पेरीमीटर। हाँ, क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हो, पढ़ो एक बार फिर से, क्या लिखा है, प्रूव दैट ऑल रेक्टेंगल्स with given area the square has smallest perimeter। तो रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, कब कन्वर्ट होता है, जब लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाती है। सो हमको इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, और जिस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम होगा वो रेक्टेंगल एक्चुअल में एक स्क्वायर होगा, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर ये चीज। So we will take the perimeter of rectangle and we will find the minimum value of perimeter, and we will check when the minimum value of perimeter is there, in that case x is equal to y or not, or we have to prove that in that case x is equal to y। Clear? So यहां पर मैं जो तीन पॉइंट्स आपको बता रहा था, आपको हमेशा ये देखना है कि आपको गिवन क्या है, आपको किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव। सो हियर यू हैव टू प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर इन केस ऑफ लीस्ट पेरीमीटर। ओके, नाउ हियर द पेरीमीटर इज हैज टू वेरिएबल्स x एंड y, तो हमको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, इसकी y की वैल्यू निकालते हैं। सपोज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन x। ओके, और y की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर। सो पेरीमीटर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस a अपॉन x। ये स्टेप क्लियर हुआ। अब पेरीमीटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये हो जाएगा dp बाय dx, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, a अपॉन x का, Minus a upon x square. करेक्ट, माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे होगा ये, भूल गए फिर से, a बाहर आ गया और 1 अपॉन एक्स, एक्स टू द पावर -1। क्लियर ये स्टेप। ओके, फर्दर हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट यहीं पर कर सकते हैं, या फिर इक्वल टू पहले 0 कर देते। फर्दर मेक dp बाय dx इज इक्वल टू 0। We will multiply product rule. In which, in second derivative, No, so then this dp upon dx only. why I we think have it will be 0 at the end, so the answer will be this only. why we have not applied product rule here with 2 and this function, Yes, sir. because 2 is constant, so we can take 2 outside the derivative, or if we are taking the product rule also, then the second derivative, if we are considering 2 as a second function, then its derivative will be 0. Okay, that's why we have not Yes, applied sir. product rule. Okay, so dp by dx equal to 0, so 2 times of 1 minus a upon x square is equal to 0. Okay, so 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 1 minus a upon x square is equal to 0. So 1 is equal to a upon x square. Cross multiply this, x square is equal to a. Okay, now what is a की वैल्यू क्या है, xy. So put xy in place of a. एक x और एक x कट जाएगा, you'll get x is equal to y. ओके, अभी ये चीज पता चल गई कि x is equal to y मिला है,
but we have to prove that in this case we have minimum perimeter. और perimeter कब minimum होगा? जब second derivative क्या आएगा? Positive. रिकॉल करो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. व्हेन द सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन वी विल गेट मिनिमा. So we will differentiate this function again. So it will be d square p by dx square, that is equal to derivative of this complete expression will be 2 can be taken outside the derivative. Derivative of 1 is 0. Minus a, we can take minus a outside this, and derivative of 1 upon x square will be what? Minus 2 by x to the power 3. यही होगा ना? Okay. Further, d square p by dx square is equal to minus minus plus हो जाएगा 2a into 2, that is 4a upon x cube. Okay. X is length of rectangle, so length will always be positive, so this value will be positive. So this complete derivative is always positive or greater than 0. Hence, when x is equal to y, we will get minima. So the perimeter is minimum when x is equal to y, or we can say that the square has minimum perimeter if the area is constant. So ये proof हो जाएगा. Clear? Any doubts? Okay. So हटा दो मैं इसको ना, अभी नोट कर लेना, उसको आराम से सॉल्व कर लेना घर में, ठीक है? पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, रिकॉर्ड भी हो रहा है क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो चलो जल्दी से. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. सभी बच्चे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और वो तीन चीजें आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में से. व्हाट इज गिवन, व्हिच वी हैव टू डिफरेंशिएट, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव. Prove that of all rectangles with given perimeter. Now the perimeter of rectangle is given. So we will consider a rectangle whose length is suppose x and breadth is suppose y. Its perimeter p will be 2 times x plus y. Okay. It is given. So here p will be taken as constant. And the square has largest area, and we have to prove that we have to differentiate the area of this rectangle. Okay, so area A is equal to xy, and we have to prove that area is maximum when this rectangle is actually a square. So basically what we have to prove that x is equal to y. ये हमको प्रूफ करना है. क्लियर ये चीज? यस यस. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पर एरिया वाला जो फंक्शन है अभी वो दो वेरिएबल्स में x और y, हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे. फॉर दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, p अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस y. सो y इज इक्वल टू p बाय 2 माइनस x. ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस फंक्शन, एरिया फंक्शन. So it will be a is equal to x into p upon 2 minus x. Okay, so a is equal to p by 2x minus x square. Okay, is it correct? Clear यहां तक? हाँ, एक डाउट उसने पूछा था, नैन इसने फोर्थ पूछा था, मैंने फोर्थ बता दिया था. ये टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, ठीक है? हाँ, यहाँ तक क्लियर ना? अब इसके बाद क्या करेंगे, डीप डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ विल डिफरेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू x. सो इट विल बी dA बाय dx, दैट इज इक्वल टू p बाय 2 minus 2x. Okay, now we will take dA by dx is equal to 0. So it will be p by 2 minus 2x is equal to 0. So p by 2 is equal to 2x. So p is equal to 4x. Now put the value of p. p की वैल्यू क्या है, 2 times x plus y, that is equal to 4x. 2 ones are
2 2s are 4. So x plus y is equal to 2x. x उधर शिफ्ट होगा, so you'll get y is equal to x. हो गया ये proof. Now second derivative should be negative. Check करते हैं second derivative. So differentiate this expression d square p a by dx square, that is equal to -2. इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव -2 आएगा. क्लियर? इट इज लेस देन 0. Hence we will get maxima at this condition when x is equal to y. कृष्णा समझ में आया क्या? इसमें ना देख डिफरेंस क्या है पता है? ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने कल की क्लास में बताया था. इसमें क्या करते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमको मिनिमम मिलता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is, prove that the perimeter of a right angled triangle of given hypotenuse is maximum when triangle is isosceles. So first we will consider a right angle triangle. Yes. First we will consider a right angle triangle. Now what is given? Its hypotenuse is given. Hypotenuse, that means h is constant. Okay. Now consider base as x and perpendicular as y. Things will be given to us in the question, that will be considered as constant only. Yes, definitely. Whatever quantity is given, it is mentioned in question, we will consider that as constant. Okay. So now what is relation between h, x and y by Pythagoras theorem? It is, yes, correct. This will be the expression. Okay. Now, what we have to prove, in which function we have to differentiate? We have to maximize what? Maximize the perimeter. Prove that the perimeter of right angle triangle of given hypotenuse is maximum. So perimeter and maximum. ये समझ में है ना? Perimeter को maximize करना है आपको. So perimeter P of this triangle will be what? What will be the perimeter? Yes, correct. So H it is y plus x. Yes, correct. H plus x plus y. And This so will as be it is written that the triangle is isosceles, so we can consider that x is equals to y. no, no. Actually, we have to prove that it is an isosceles triangle. Okay. So actually, we have to prove that x is equal to y. Sir, it says prove that the perimeter of a right angle triangle of given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles. Yes. So first, what we will do, we will find the maximum perimeter. At what point we are getting maximum perimeter? First, we will find that, and we will check when the perimeter is maximum. Then what kind of condition is there? So if x is equal to y, then it proves that it is maximum when it is an isosceles triangle. Yes. Okay. So ये पूरा expression हो गया. Now here perimeter has two different variable. One is x and another is y. H is constant. So take x as it is and put the value of y from this expression. So y will be root over h square minus x square. So we can replace y with this value, h square minus x square. Okay. Now differentiate p with respect to x. Differentiate p with respect to x. So क्या होगा? dp by dx is equal to, right hand side में क्या होगा? Derivative of h is 0. Derivative of x will be 1 plus derivative of this part will be what? 1 upon 2 root h square minus x square into minus 2x. We can take directly minus 2x by chain rule. Further,
dp by dx is equal to 1 minus x upon root over h square minus x square. ये 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा. Further, take LCM. So dp by dx is equal to root over h square minus x square minus x divided by root over h square minus x square. Okay. Now, नहीं सेपरेट क्यों करना. अब dp by dx को is equal to 0 करो. dp by dx is equal to 0. So root over h square minus x square minus x whole upon root over h square minus x square is equal to 0. ये वाला पूरा टर्म उधर जाके 0 हो जाएगा. So root over h square minus x square minus x is equal to 0. Okay. So further, root over h square minus x square is equal to x, squaring both the side. So h square minus x square is equal to x square. So h square is equal to 2x square. Now put the value. कहां पर? हाँ यार ये भी सही बोल रहा है. यहां पर डायरेक्टली हम यहीं पर y लिख देते हैं. Replace this with y square. So we will get y square is equal to x square. So it means x is equal to y. Okay. Now the second derivative should be what? We have to maximize the perimeter. चेक करो पेरीमीटर को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था ना. सो सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव. सो डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी नेगेटिव. अब जो भी आएगा उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना. ठीक है. हाँ बिल्कुल. हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हैं. ठीक है. सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू y. हेंस it is proved that the perimeter is maximum when x is equal to y. It means when it is an isosceles triangle. So it proves that isosceles triangle has maximum perimeter. Clear? Next question पे move करें. Shall we clear? Sir, if we have to choose the second derivative, can you please tell how we have to show the equation? Okay, actually if you have to show that the second derivative is also negative, then you have to differentiate this expression or this expression also. You can differentiate this expression. So second derivative d square p by dx square, that will be equal to derivative of 1 will be 0. You can take minus outside, and further you have to apply quotient rule here. So if you are applying quotient rule, so the square of denominator will be there. So it is like this. And further numerator you have to apply denominator derivative of Sir, in numerator. exams we have to show all these steps, the second derivative also, or we can directly write. Actually, huh? Just wait. Huh? ये ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया. हाँ. Yes, in exams you can do this if you have time. But in most of the cases, this type of function will be quite complex. So you can directly write like this also. Okay, that is also fine, because in coming questions we are getting so complex expression that is quite difficult to differentiate actually. So और ये unnecessary step है. इस step का कोई ज्यादा significance नहीं, because we are getting answer here. And this is just to show that it is positive or negative. Only the sign matters in this case. So we cannot बस ये हमको ना ये स्टेप लिख देना, एक्चुअली ये कर देना. अगर आपको डायरेक्टली होते हुए दिख रहा है एक लाइन में तो आप वो शो कर दो. बट अगर ऐसा कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, सो एक दो स्टेप सॉल्व करके छोड़ दो फिर उसको. ठीक है. Okay. And sir, as it is a proof question, that means we can directly write our answer, no? Yes. Okay. Now next question number 8.
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन सब ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। मैं एक्चुअली 1-2 मिनट एग्जांपल्स देख रहा था, कहीं पर ऐसा किया है क्या? तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो ना तब तक। The perimeter of a triangle is 8 centimeter. If one of the side is 3 centimeter, what are the length of other sides for maximum area of triangle? Okay. क्या लग रहा है? हेरॉन्स फॉर्मूला अभी कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ा रहा था 9th के बच्चों को, ठीक है। सो a triangle is given to you. Okay, its perimeter is also given P, that is equal to 8, and this triangle has 3 sides A, B and C. The length of the sides are for given है क्या किसी की लेंथ? एक साइड की लेंथ गिवन है 3 और B और C की वैल्यू गिवन नहीं है, B and C क्वेश्चन मार्क। ओके, सो perimeter is actually A plus B plus C, that is equal to 8. So put 3 in place of A, so you'll get B plus C is equal to 5. Okay, ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चेक करो क्वेश्चन में किसको मैक्सिमाइज करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया का फंक्शन फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। सो एरिया का फंक्शन क्या होगा? एरिया अगर साइड्स गिवन है तो एरिया में हम हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, सो वी विल अप्लाई हेरॉन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैपिटल ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये है हेरॉन्स फॉर्मूला। नाउ हियर व्हाट इज एस? एस इज नहीं, एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, half of perimeter. So S is perimeter by 2. So here perimeter is 8, 8 by 2, that is 4. Okay. Now put the values of S, A, B and C. So it will be root, S के place पे आ जाएगा 4, it will be 4 minus 3, 4 minus B. हाँ, इसके बाद कर देंगे स्क्वायरिंग, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। So A is equal to, it will be root 4, 4 minus B, 4 minus C. Okay. Sir, Now I we, think B we can directly write it as 5 minus C, no? So that we will have one variable at the end. yes, yes, yes. We will replace B with 5 minus C. Correct. So it will be A is equal to root over 4. 4 minus, in place of B we can write 5 minus C and 4 minus C. So A will be root over 4 and it will become C plus 1, I think. C minus 1. Check करो. C minus 1 हो जाएगा ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस सी, एंड 4 minus 5 that is minus 1. ओके, सो फर्दर यहां तक क्लियर ना सबको? नाउ फर्दर वी हैव टू डिफरेंशिएट ए. नाउ वन मोर थिंग व्हाट यू कैन डू इज you can square this expression also, because if a is maximum, it means a square is also maximum. So either you are maximize area or you are maximize square of that area, both mean same. Okay, so we can take we can square both the sides, so it will be a square is equal to 4c minus 1, 4 minus c. यहां पर भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते तो भी चलेगा, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक्सप्रेशन और डेरिवेटिव निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हमने स्क्वायरिंग कर दिया। नाउ दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू, जस्ट वेट, this you can replace this a square with some other variable, like what we can consider this as u. You can consider u also. Okay, now u is equal to 4 c minus 1 and 4 minus c. Okay,
नहीं, ए स्क्वायर को यू ले लिया है, वो इसलिए मैंने लिया क्योंकि जब सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये ना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको यू ले लिया. ओके, नाउ डिफरेंशिएट यू विद रेस्पेक्ट टू सी. सो इट विल बी डी यू बाय, और वी के, हाँ वी नहीं, विद रेस्पेक्ट टू सी लेंगे ना, यहां पर वेरिएबल क्या है, सी है ना. समझ में आ रहा है ये चीज. अच्छा, एक चीज और कर लो कि अभी इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के पहले ये वाले दोनों के ब्रैकेट्स ओपन कर लो, तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा ना, नहीं तो अननेसेसरी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. सो ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो देखो क्या होगा, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएगा, 4c प्लस सी, 4c प्लस सी माइनस 4 माइनस सी स्क्वायर There are equation will माइनस be सी स्क्वायर. 20c minus, sorry, minus 4c square plus 20c minus 16. You are multiplying 4 also. Yes, sir. Okay, okay, that is also fine. So it will be like this if we are taking 4 common. Further, we will differentiate u with respect to c, so it will be 4, and derivative of this expression will be minus 2c plus 5. स्प्लिट करेंगे तो वापस वही आएगा. ओके, नाउ du by dc, make du by dc is equal to 0. So 4 times minus 2c plus 5 is equal to 0. So you'll get minus 2c plus 5 is equal to 0. So c is equal to 5 by 2. You're getting c is equal to 5 by 2. Okay? Clear? Now what about b? b की वैल्यू भी सेम आएगी because b plus c is equal to 5. So if c is equal to 5 by 2, b will also be 5 by 2. So you'll get b is also 5 by 2. Okay? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. Now we have to prove that the area is maximum in this condition. So area to be maximum, its second derivative should be negative. So we will differentiate this expression again. This expression. So derivative of this expression will be d square u by dc square is equal to 4 will be taken as it is outside the derivative, and derivative of minus 2 will be minus 2. Minus 2c will be minus 2. And derivative of 5 is 0. So we are getting negative value in second derivative. Hence it is maximum in this condition. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो फिर. देखो, पूरे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना इसमें, आपको बस ये 3 चीजें ही समझनी है और कुछ नहीं. बट प्रॉब्लम इज दैट इसमें ना सारे ज्योमेट्री के फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए. मतलब सरफेस एरिया, वॉल्यूम के फॉर्मूले, रेक्टेंगल और ये सब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स अभी आएंगे आगे, बुरे वाले भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Questions like example 24 and 25, these type of questions are expected. Example 24 and 25. हाँ, उसके डायग्राम देख के वो बस वैसे ही क्वेश्चंस करने. तो मैं सीधे वैसे क्वेश्चंस पे जंप कर दूं क्या, या थोड़ा स्लोली जाए? बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है. रुको यार, सब बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई थिंक एक क्वेश्चन यहां से लू क्या, क्वेश्चन नंबर 13, सीधा आगे जंप करके थोड़ा सा ये चेक कर लो. एक काम करो, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया ना, 9, 10, 11, 12, चेक दीज क्वेश्चंस. जस्ट रीड दीज क्वेश्चंस एंड आस्क which question. The ninth one is only hard. It says Ninth one.
Yes, so 2 centimeters and 1 centimeter margins are there. That means we'll have to eliminate the margin side. Okay. Okay, let's see question number 9. A sheet of paper is to contain 18 centimeter square of printed matter. The margins at the top and bottom are 2 centimeter and at least 1 centimeter each. Sorry, and at the sides 1 centimeter each. Sorry. Find the dimensions of the sheet which require the least amount of paper. The sheet of a paper contains 18 centimeter square of printed area. The margins at the top and bottom. Okay. ओके सो एक काम करते हैं, पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए, ठीक है. सो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द शीट ऑफ पेपर. दिस इज द शीट ऑफ पेपर. ओके, and this paper has dimensions x and y. Okay, now in this paper uh, the printed material is like this part is printed part. Okay, now in this printed part we have margins in top and bottom and on the sides. Now what about the margins in top and bottom? First tell me the margins in top and bottom. It is what? 2 centimeter. So this distance is 2 centimeter. Okay, and this distance is also 2 centimeter. Okay, margins on the sides are what? 1 centimeter. So this is 1 centimeter and this is also 1 centimeter. Okay, is it clear? Now tell me the dimensions of printed matter. Dimensions of printed matter, that means the dimension, the length of this printed matter. It will be x minus 2. How it is x minus 2? Because total length is x and we have to leave the margin of 1 centimeter on the both the sides. And similarly this part will be y minus 4. Clear ये चीज सबको? ठीक है? Okay, now we have to minimize what? We have to minimize the area of paper. And how we can minimize the area of paper? When just wait, find the least amount of paper. So least amount of paper means area of paper should be minimum. Clear? So area of paper should be minimum. So area of paper can be written as x into y. Okay, clear? Okay, so here area depends on two variables. First one is x and second one is But y. also A is given as 18. No, area of paper is not given. Area of printed matter is given, that is 18. Area of paper should be minimum. Okay, so this part is clear. Area of paper minimum hona chahiye, so area should be minimum. Now the area of printed matter is 18 centimeters square. So what is given? What is 18 centimeters? Just look at the figure and try to answer. So I Yes, can write it as y minus 4 bracket x minus 2 is equals to 18. yes, correct. Y minus 4 into x minus 2, that is equal to 18. Clear yahan tak sabko? Now further, when we open the bracket, we will get xy minus 4x minus 2y plus 8 is equal to 18. And further we will get xy minus 4x minus 2y is equal to 10. Okay. Now we have to minimize the area, na? So, okay.
नहीं मैं एक्चुअली क्या सोच रहा हूँ पता है, मैं पहले बता दूं जो मैं सोच रहा हूँ। हमको एरिया को डिफरेंशिएट करना है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी यहाँ पर दो वेरिएबल एक्स और वाई, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर से ना एक्स या वाई किसी एक की वैल्यू निकालूंगा। सो आई थिंक वाई की वैल्यू निकाल लेते इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो देखो ये एक्सप्रेशन क्या होगा। यहां पर ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे। सो एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 10 + 4x। क्लियर? टेक y कॉमन फ्रॉम लेफ्ट, यू विल गेट x minus 2, that is equal to 10 + 4x. Clear? So y will be 10 + 4x upon x minus 2. ये आ जाएगी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे एरिया पे, इस पे एरिया ऑफ पेपर का जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था। सो एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई था। नाउ पुट y दिस। सो एरिया a इज इक्वल टू x इंटू, इट विल बी 10 + 4x अपॉन x minus 2. Is it clear? Now we are getting area as a function of only one variable, that is x. Now we have to differentiate this area with respect to x. Okay, रिया समझ में आ रहा है? अभी अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, थोड़ा ऐसा आएगा हर क्वेश्चन में, कुछ नया नया दिखेगा। सो dA/dx विल बी व्हाट? अच्छा पहले पहले डिफरेंशिएट करने के पहले ना ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ न्यूमरेटर में, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? tan x + 4x² अपॉन, हाँ ये डी नहीं ए है। हम्म, अब dA/dx डिफरेंशिएट करते हैं। सो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? x minus 2 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आएगा? x minus 2। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, सो डेरिवेटिव ऑफ 10x विल बी 10, डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट विल बी 8x minus numerator, that is 10x plus x square, sorry 10x plus x square into, अच्छा 4x², 10x plus 4x² into 1। ओके, यहां तक क्लियर? नाउ फर्दर सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन dA/dx, that is equal to denominator as it is। यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा चेक करना। 10x minus 20 plus 8x² minus 16x minus 10x minus 4x²। ओके, सो प्लस 10x minus 10x। क्लियर ना? फर्दर dA/dx will be 8x² minus 4x², so it will become 4x² minus 16x minus 20 divided by x minus 2 whole square. Okay, now you can take 4 common also, so x² minus 4x minus 5 upon x minus 2 whole square। यहीं पर फैक्टराइज भी कर लो। हाँ, ऑफ कर देता हूं। तुम लोग फैन के नीचे बैठे हो ना, इसलिए ठंडी लग रही है। देखो तो क्यों इतना घूम रहे थे? ओके, सो यहीं पर फैक्टराइज कर लो, स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को। सो इसमें स्प्लिट होगा dA/dx, यू विल गेट 4 x minus 5। क्या आएंगे फैक्टर्स एक बार चेक करना। आई थिंक x plus 1, x minus 5, x plus 1 divided by x minus 2 whole square। चेक करते जाओ यहां तक, क्लियर ना? फर्दर dA/dx is equal to 0, so 4 times x minus 5, x plus 1
divided by x minus 2 whole square is equal to 0. ये वाला पूरा पार्ट उधर जाके 0. So you'll get x minus 5, x plus 1 is equal to 0. So you'll get two values of x. First is x is equal to 5 and second is x is equal to minus 1. Okay. We will reject this value. Why? Because x cannot be negative. So value of x will be 5. हाँ बोलो. डिनोमिनेटर को भी इक्वेट करते बट उसमें भी आपको वैलिड आंसर नहीं मिलेगा, उसको रिजेक्ट कर सकते. x इज इक्वल टू 2 वैलिड नहीं होगा ना, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 अगर ले लोगे तो ये मार्जिन 1 1 माइनस कर दोगे तो विड्थ तो 0 हो गई ना. तो हमेशा ऐसा ही होता है, डिनोमिनेटर को इसलिए रिजेक्ट कर दिया करो. ठीक है. यू गेट x इज इक्वल टू 5. x की वैल्यू 5 मिल गई. अब y की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है. सो पुट x इज इक्वल टू 5 इन दिस. सो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? y is equal to 20 plus 10 30 upon 3, yes, 10. So x is equal to 5 and y is equal to 10. So what you have to find in this question, you have to find the dimensions of the sheet which is required. So dimensions of sheet will be 5 centimeter by 10 centimeter. Okay, now check the answer. Correct? Okay. So ऐसा हर क्वेश्चन में नया ट्विस्ट मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें. हाँ चलो अब तुम लोग ट्राई करो. नहीं हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे मूव करूं तो ऐसे मैं सीधे एग्जांपल्स से स्टार्ट करूंगा. एग्जांपल 24, बिकॉज मुझे उसमें दिख जा रहा है हाँ ठीक है ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. एग्जांपल 25 चेक कर लेते. हाँ कर. अब देखो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं लेकिन इट विल टेक टाइम. ठीक है. सो आई थिंक मुझे एग्जांपल 25 पहले दिख रहा है. 25 पहले मैं बता देता हूं. ओके. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 25. चेक करो क्वेश्चन नंबर 25. एग्जांपल 25, सॉरी एग्जांपल 25. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन से, कोर मैथ्स के लिए बता रहा हूं ना. क्वेश्चन पढ़ना एक बार. शो दैट altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3. ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? लाइन समझ में आई? शो दैट altitude of right circular cone of maximum volume that is inscribed in a sphere of radius r is this. क्या समझ में आया इससे? बहुत सारी चीजें गिवन है. सबसे पहले तो ये गिवन है कि एक स्फीयर है. स्फीयर का सबसे पहले एक स्फीयर है, उसके अंदर क्या इंस्क्राइब है? एक कोन इंस्क्राइब है. तो उसके अंदर एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये हो गया कोन. जस्ट वेट. राइट सर्कुलर कोन मतलब ये ऐसे ही होता है. ठीक है. ठीक है. और ये जो स्फीयर गिवन है इसका आपको रेडियस गिवन है? नहीं, आर है. इस स्फीयर का रेडियस क्या है? आर. तो ये आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा. यहां तक क्लियर? ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन इंस्क्राइब्ड इन दिस ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. तो किसका वॉल्यूम मैक्सिमम है? किसका वॉल्यूम मैक्सिमम लेना है हमको? नहीं, कोन का वॉल्यूम. देखो ना क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको. क्या लिखा है? शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. ठीक है. सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन. सो इट मींस यू हैव टू डिफरेंशिएट द वॉल्यूम ऑफ कोन. क्लियर? ओके. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू v. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? किसको किसको याद है यहां पर? शैवी? नहीं, नहीं है किसी को याद? नहीं, सब याद करना पड़ेगा. ठीक है. सो नहीं, 1/3
pi r square h. Okay, 1 upon 3 pi r square h. Okay, so here we will consider capital R square and capital H. Why? Because small r is the radius of sphere and it is given. So we will take this small r as constant. Whatever is given in question, that will be considered as constant. So question में given है ना ये small r, तो वो constant है. हाँ हाँ हाँ, वेट, जस्ट वेट, मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूं. अब उसके बाद क्या लिखा है, फिर से क्वेश्चन की उसी लाइन को पढ़ो, उसे एक लाइन में ही सारी स्टोरी गिवन है. शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन of maximum volume that can be described in a sphere is 4r/3. अब तुम लोग पढ़ के बताओ वो 4r/3 क्या है. क्या है एल्टीट्यूड, किसका एल्टीट्यूड, कोन का. तो आपको प्रूव करना है, शो दैट द एल्टीट्यूड इज 4r/3. एल्टीट्यूड मींस हाइट. सो दिस हाइट, सपोज this is the height of cone capital H, then you have to prove that H is equal to 4r/3. क्लियर यहां तक, ठीक है. सब मैं जो आपको बोलता था ना, हर क्वेश्चन में 3 चीजें आइडेंटिफाई करो कि क्या गिवन है. तो यहां पर क्या गिवन है, r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. तो यहां पर वो फंक्शन क्या है, वॉल्यूम. और उसके क्या प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करना है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4r/3. क्या ये समझ में आया. फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. क्लियर यहां तक, ओके. अब इसके बाद आगे आते हैं. नेक्स्ट यहां पर ध्यान देना, अब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, ये तो क्लियर हो गया. बट वॉल्यूम में अभी 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास. कौन से, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल एच. हम उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इधर ध्यान देना. हम यहां पर ना इस वाले, ये जो है सेंटर ऑफ स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. और सपोज ये वाला जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट को अगर मैं बी लेता हूं, तो ये जो बी है ये क्या है, ये जो कोन का सर्कुलर बेस है उसका सेंटर है. समझ में आ रहा है ये चीज. और इस वाले डिस्टेंस को मैं स्मॉल एच कंसीडर कर लेता हूं. ओके, और So, ये our capital H is from the top radius till this middle point. yes, definitely. Capital H is from this vertex to this center of base. Okay, and small h is this distance only. Yes, now this distance is actually radius of circular base of that cone. So this value we have considered as capital R. So it is actually capital R. Till this point it is clear to all. Okay, So, क्योंकि but what is the point of taking OB as a small h? Just because simplification, just because we need to find the relation between capital H and small r. So we have to identify this point. If we are not taking this as small h, then also it is fine. Okay, हाँ क्या बोल रहे थे. Okay. Okay, so till this point it is clear. Now the volume V is equal to 1/3 pi r square h. Okay, now what about capital H? Capital H is actually small r plus small h. So V is equal to 1/3 pi capital R square into small r plus small h. नहीं, एक सेकेंड ना, इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. इसको ऐसे नहीं करते. So, h we have taken as 4r/3 also. 4r/3, no, it is not given. We have to prove that. We have to prove. It is to prove. Just read the question. You have to show that the altitude of cone is 4r/3. Okay. हाँ ठीक है, यहां तक हो गया. अब देखो नेक्स्ट, इधर ध्यान देना. ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे ध्यान दो. इधर ये वाले ट्रायंगुलर पीस पे फोकस करो. ठीक है, ये वाला ट्रायंगुलर पीस,
ये ट्रायंगुलर पीस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो क्या होगा? स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एच स्क्वायर. क्या ये स्टेप क्लियर है? So we can find the value capital R square. It will be small r square minus small h square. Okay. Now we can put this value here. So V is equal to what? 1 upon 3 pi. And in place of capital R square, we will get small r square minus small h square into capital H. Clear? यहाँ तक का step clear हुआ? Still, we have two different variables. First one is small h and second one is capital H. तो स्मॉल h की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट दिस कैपिटल H इज एक्चुअली स्मॉल r प्लस स्मॉल h. ओके. तो दोनों में से किसी भी को भी रिप्लेस कर दे सकते हैं. मैं एक काम करता हूं, यहां पर कैपिटल H को रिप्लेस कर देता हूं, बिकॉज वो ज्यादा इजी होगा. अगर इसमें करूंगा ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो फंक्शन. ओके. सो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई. This is r square minus h square, and in place of capital H we can put r plus h. Okay, this point तक clear है? Now this function of volume has only one variable, and that variable is what? H, because r is constant. So ये पूरा हमने ये जो simplification किया just because we want to replace two variable इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल. हमने ये स्मॉल h के टर्म्स में लाया. आप चाहो तो कैपिटल H के टर्म्स में भी ला सकते हो, आप चाहो तो कैपिटल R के टर्म्स में भी ला सकते हो, किसी भी टर्म्स में ला सकते हो. बट आपको ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन ऐसा बने जिसको डिफरेंशिएट करना इजी हो. ओके. नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन. सो dv बाय d small h is equal to 1 upon 3 pi is constant, so we can take pi by 3 outside the derivative, and further we will apply the product rule. So we will consider this as first function and this as second function. Okay, now apply product rule. So first function, it means this into derivative of second. So इसका derivative क्या होगा बताओ मुझे देख के. with respect to h कर रहे हैं ना, derivative क्या होगा? 1, because r is constant, so derivative of h is 1. फिर plus second function, that is r plus h. Now what about derivative of this function? It is minus 2h. Okay. Now dv by dh is equal to pi by 3. Further, to this expression r square minus h square, we can write r plus h into r minus h plus, no, not plus, it is minus 2h under bracket r plus h. यहां तक का स्टेप क्लियर है? a square minus b square अप्लाई कर दिया ना मैंने. फर्दर वी कैन टेक r plus h कॉमन. कैसे कैंसिल होगा? r plus h कॉमन निकलेगा ना. r plus h can be taken common from this, and we will get r minus h minus 2h. Okay. So further dv by dh is equal to what? It is pi by 3 r plus h, and next term will be r minus 2h. No, not 2h, it is 3h. Just check. Minus h minus 2h. Minus 3. Yes. Okay. Further we will differentiate, we will equate this expression to 0. So dv by dh is equal to 0. So pi by 3 r plus h, r minus 3h is equal to 0. Okay. Now r plus h is equal to 0 and r minus 3h is equal to 0. So you will get h is equal to minus r, and you will get h is equal to what? R by 3. Okay, because we have to find the value of h. Why we need to find the value of h? Because capital H depends on small h,
and we have to prove that capital H is this. So to find capital H, we have to find small h, and that's why we are getting small h in terms of capital is in terms of R. Okay, so this value will be rejected. Why? Because length cannot be negative. So we will consider h is equal to small r by 3, and we will put this value of h here in this expression. So capital H is equal to small r plus small h. So capital H is equal to small r plus r by 3. So it will be 4r by 3. Hence it is proved that the height of the altitude of that cone will be this. Now just one thing is still remaining. What is that? Maxima minima check करना पड़ेगा. So the second derivative should be negative. Now we have to find second derivative of this expression. लिख दो ना डायरेक्ट, चलेगा. इसीलिए तो मैंने डायरेक्टली लिखना बताया. सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए. आप यहां पर से भी अगर चेक करोगे ना तो देखो इस एक्सप्रेशन के अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो सपोज, सो इस एक्सप्रेशन के बाद वो ज्यादा आसान होगा. इस एक्सप्रेशन को पहले नहीं, इस एक्सप्रेशन नहीं, इस एक्सप्रेशन के बाद, इस एक्सप्रेशन के बाद इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देना. dv by dh that is pi by 3. So it will be r square minus h square minus 2hr minus 2h square. ऐसा हो जाएगा एक्सप्रेशन. समझ में आएगी नहीं? ब्रैकेट ओपन किया मैंने, r square minus h square minus 2rh minus 2h square. ओके, अब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0. इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव -2r, इसका डेरिवेटिव -4h, क्योंकि h का डेरिवेटिव होगा 2 और r तो बाहर निकल गया. h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1. समझ में आया कि नहीं? ये चीज आपको दिमाग में वो क्लियर हो रहा है ना? r कांस्टेंट है, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h. सो दिस पार्ट इज 0, दिस पार्ट इज -2h, इस पार्ट का क्या हो जाएगा? -2r बिकॉज h का डेरिवेटिव 1, इस पार्ट का क्या हो जाएगा? -4h. Okay. So 2hr is in multiplication. So how have we directly taken h as 1? Look, just understand this. If we have a function like this, -2ax, okay, and suppose here a and x, a is constant and x is variable. So when we differentiate this expression with respect to x, we can take this -2a common or outside the derivative. Yes, so d by dx of x is 1. So similarly here we can take -2r outside the derivative and derivative of h is 1. Okay, सब नेगेटिव आया ना सेकेंड डेरिवेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालोगे d square v by dh square, it is actually pi by 3, and this expression will be -2h -2r and -4h. So you can take minus common from this. So overall expression is negative. It means it will be maximum in this condition. Clear? Less than 0. अरे मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 होना चाहिए ना. नेगेटिव उल्टा कंडीशन लिख दोगे तो मार्क्स भी उल्टा मिलेगा. नहीं, लेस देन 0 होता है. मैक्सिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है. ओके, हाँ ठीक है, क्लियर सबको? ओके ओके, सो आई थिंक यहां पर मैं स्टॉप करता हूं आप लोगों को. लेकिन क्या करना पड़ेगा पता है? पहले ये कहां लिखा है कल की क्लास में? जस्ट वेट, मैंने ऐसा लिखा ही नहीं सकता. कैसे लिख, मेरे पास है पूरा उसका प्रूफ, एक बार चेक कर लेते हैं. मैं पहले इसको सेव कर लेता हूं. अभी बच्चा है ना, ये पूरा जो टॉपिक है ना, इट विल टेक टाइम. अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है कि एग्जाम के क्वेश्चंस बने, सो ये जो क्वेश्चंस हमने बनाए ना, इस लेवल के एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व. अब आपके ऊपर है चॉइस. अगर आप लोग घर पे सॉल्व करोगे इसको ज्यादा, सो हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे. और अगर आप चाहोगे कि पूरे क्वेश्चंस मैं यहां पर बताऊं, तो
आप समझ लो उतने टाइम लगेंगे एक क्वेश्चन। हम्म मैं एक काम करता हूं, सुनो वेट करो। मैं ना अपना एक वो प्लेलिस्ट तुम लोगों को शेयर करता हूं जिसमें ये करवाया था, ठीक है, वो कोर मैथ्स की बैच में। उसमें से देख के ना वो जितने क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस कर लो। सेम इसी प्रोसीजर से मैंने एक्सप्लेन किया, उसको मैं आज ही शेयर कर दूंगा। और क्या बोल रहे हो तुम वाले में? हाँ, मैक्सिमम इन, हाँ हाँ, क्या लिखा है था वो चेक करना है ना। कब? कल ही की क्लास में मैंने पढ़ाया था ना, 20th। एक मिनट, अगर मैंने ऐसे लिखाया होगा तो मैं करेक्ट करवा दूंगा, चेक करना। सबसे पहले तो यही था ना, ये देखो मैंने तो एकदम क्लियर लिखा है, एफ डबल डैश ऑफ सी वन इज लेस देन जीरो, देन सी वन इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तुमने तो ग्रेटर देन बोला ना, ये ग्रेटर देन बोली। ठीक है,